class we have studied the Laplace transformation of a derivative and integral. Now we will study some application of that part. Now first, Laplace transformation of if Laplace transformation of a function f(x) equals to p is given by f of p, then Laplace transformation of x की power n f of x p is given by minus 1 raised to the power n d over n f of p. सिंपली है, यदि हम अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f(x) को हम f of p से नोट करते हैं तो इस फंक्शन को x की पावर n से मल्टीप्लाई करने पे इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस फंक्शन f of x के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के n टाइम डेरिवेटिव के इक्वल होता है माइनस 1 raised to the power n. एंड एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of x p is given by f of p, then Laplace transformation of f of x over x, any function f(x) is divided by x is given by integration p to infinity f of u du. यानी f of u du क्या है हमारा, f of u है, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन f(x) है, इसके इंटीग्रल के इक्वल होता है। यदि हम लाप्लास फंक्शन अगर कोई फंक्शन f(x) का ट्रांसफॉर्मेशन पता है f of p है, देन द फंक्शन डिवाइडेड बाय x, अगर इस फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे देन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो इस फंक्शन के f(x) के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के p लिमिट्स p टू इन्फिनिटी के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। अब इसे मैथमेटिकली एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं। इनका सिलेबस में प्रूफ नहीं है तो इनका सिलेबस प्रूफ अवॉइड कर रहे हैं। Let's example. We have to find Laplace transformation of x square sin ax. तो यार हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ax पता है। फंक्शन अगर इसे हम फंक्शन f(x) मानते हैं तो यहाँ पे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है फंक्शन मल्टीप्लाई बाई x रेज़ टू द पावर n, वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी लेट यहाँ इफ वी टेक फंक्शन f of x इक्वल्स टू हियर sin ax, तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें जो कुछ सरल फॉर्मूलाज है वो याद रखने हैं। तो व्हाट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin ax? व्हाट इज इट? इट इज a over p square plus a square, यही होता है। नाउ what will be the Laplace transformation of this function? This is what is now. This is change in x square f of x p. So what is our formula for this? X की power n f of x minus 1 raised to the power n, where here n is 2 d over dp power n f of p is what? A over p square plus a square, ये है हमारा। ना इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर इज डी ओवर डी पी। फर्स्ट सवाल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का किया 0 माइनस ए को छोड़ा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पी के रिस्पेक्ट में किया है 2p, तो ये we will get minus 2a d over dp equals to write it as minus 2a d over dp p over p square plus a square का होल स्क्वायर। नाउ अगेन
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस पी एज इट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी का 2 ऑफ पी। तो ये हमारा क्या हो गया इट कैन बी माइनस ऑफ 2a पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जगह ये बचेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर 2 माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 और 2 4 इट्स 4p स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 2a पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 2a 3p स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अंदर चला जाएगा तो 3p है 3p स्क्वायर माइनस साइन माइनस माइनस प्लस तो सिंपली यही स्क्वायर से जोड़ सकते हैं हम 2 टाइम्स ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर की 3p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर here whole cube simple so we can solve we find the solution of if the function is we know the transformation of the function and the function is multiplied by some power of xn then we can use this formula and find the solution. Now let us take some another example. Now if we have to find the Laplace transformation of find the Laplace transformation of sine of ax minus ax cos ax cos of ax plus sin x over x। हमारा इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो वी कैन राइट इट एज Laplace transformation of sin of ax p minus Laplace transformation of ax cos of ax p plus Laplace transformation of sin x over x p. We can write it as now we know the Laplace transformation of sin ax is what a over a square plus p square so it's a over a square plus p square minus this is Laplace transformation of ax cos of ax so it can be written as Laplace transformation of L of x cos of x multiplied by x. This is Laplace transformation of f of x over x p so it can be written as Laplace transformation of p to infinity Laplace transformation of sin x p du f of u du तो here sin Laplace transformation of sin x इसको हमने सिंपली लिख दिया Laplace transformation sin x of du this is our a square over a square plus p square minus a now Laplace transformation of x into cos of ax माना ये हमारा है तो ये it will be what minus 1 की पावर n d over dp Laplace transformation of cos of ax this is what p to infinity sin of x का Laplace transformation क्या होता है a over p square plus a square here a is 1 so it is a square over p is changed into u square plus 1 du now this is our a over a square plus p square
minus minus plus a here d over dp. Laplace transformation of cos of ax is what? P over p square plus a square plus integrating this 1 upon integration of 1 upon x square plus 1 is tan inverse x. We can write as tan inverse u p to infinity. Now this is the same a square over a square plus b square plus a p square plus a square. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो what is this? p square plus a square का होल स्क्वायर d over dp. First this is p square plus a square. p का क्या 1 minus p square plus a square क्या है 2p plus applying the limits here. What is this? Tan inverse infinity minus tan inverse p, which is equals to, this is a over a square plus p square plus here this is p square plus a square minus 2p square, so it can be p square a square minus p square. So this is a square minus p square over p square plus a square का whole square. This tan inverse infinity is what? Pi by 2 minus tan inverse p, which is the required transformation of the given function. We can use our all formulas here. The function is multiplied by x. The function is divided by the x. Now we find the मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे पता भी चल जाए कि कितने लोग वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं. फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ रूट टी पी एंड hence deduce Laplace transformation of cos under root 2 over root t. Laplace transformation of sin root t आपको फाइंड करना है, और इसके बाद Laplace transformation of ये फाइंड करने के बाद आपको इस रिजल्ट से फाइंड करना है Laplace transformation of cos root t over root t. ये आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. वी विल फाइंड नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इंटीग्रेशन, जो जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 0 to x f of x dx इज गिवन बाय f of p over p. ये मेरे हिसाब से सबको याद होगा. मैंने बताया था कि आपको रिमेंबर भी रखना है. तो नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ if I say we have to find the Laplace transformation of 0 to x 1 minus e raised to the power minus u over u du. We have to find the Laplace transformation of integral of the function 1 minus e raised to the power minus u over u du. Now here it can also be written as the Laplace transformation. The function it can be taken as, if we take here the function f of x such 1 minus e raised to the power minus x, then जो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो हमारा क्या फंक्शन बन जाएगा f of x over x. हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, तो we can write now, we can take that first f of x equals to 1 minus e raised to the power minus x. Then Laplace transformation of
क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स पी. Laplace transformation of 1 is 1 upon p minus Laplace transformation of 1 of minus x is what 1 upon p plus 1. So it is what p into p plus 1 minus p 1 over p into p plus 1. This is our Laplace transformation. Now this is the Laplace transformation of this part of the only 1 minus e to the power minus u. Now if we divide it by u, we find the it is it. Now if we write it as Laplace transformation of 1 minus e to the power minus u over u p can be written as Laplace transformation of f of x over x. What is this? This is p to infinity f of u du. Here p to infinity f of u is what 1 upon u plus 1 du. This is our 1 upon u plus 1. इसको अगर हम सॉल्व नहीं करते हैं तो ये वही है p to infinity 1 upon u minus 1 upon u plus 1. हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 upon u log of u minus log of u plus 1 p to infinity. Now it can be written as log of u over u plus 1 p to infinity equals to this is. For we can take can be written as limit u tends to infinity. U common ले लेंगे तो it is 1 upon u over u common लिया तो this is 1 over 1 plus 1 upon u minus putting p log of p over p plus 1. So then we putting here u tends to infinity, it is 0. So here we will get log minus of log p over p plus 1. Yeah, we can write it log of p plus 1 over p. Changing the sign can be written as log of p plus 1 over p. Now we have to find the Laplace transformation of integral 0 to x 1 minus e to the power minus u f of u du. We have find the Laplace transformation of this whole function. If we now we can say that this is the function f of u. So we find the Laplace transformation of this f of u, which is log of p plus 1 over p. Now applying the formula, what is this? Laplace transformation of 0 to x f of x dx. p is what? Laplace transformation या function Laplace transformation function f of p divided by the p. So what is this here? How we can write it? Laplace transformation of this function is log of p plus 1 over p divided by the log. This is our required answer. This is our required solution of the Laplace transformation of 0 to x 1 minus e to the power minus u over u du. So we have now here we have find the Laplace transformation of. So here we almostly use our formulas. Laplace transformation of the function f(x) divided by the x, then the Laplace transformation of the integral, which is p over p. So you have to deduct the when you see the question, you have to find that the question क्या कह रहा है आपसे, कि क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज हमारे गिने हुए हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर n, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, sin x, cos x, sin hyperbolic, cos hyperbolic. These are the standard function which Laplace transformation we have to remember.
Then using these functions and the properties of the Laplace transformation, we have to solve the question. So you have to always remember the properties of the Laplace transformation, which is the change of scale property, first shifting property, second shifting property, linearity property. Then we find the Laplace transformation of derivative, Laplace transformation of integral. Now the function is multiplied by the x की power n, the function is divided by the x. These are the basic properties of the Laplace transformation. We have to remember these all properties and these all the results of the standard function to solve a question using the Laplace transformation. Is clear?